Ladies and gentlemen, good day and welcome to the GR Infraprojects Limited 2Q FY23 results conference call hosted by HDFC Securities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Parikshit Kanpal from HDFC Securities. Thank you, and over to you, sir. Thanks, Tanvi. Thanks for your call. Please. Yeah, so I would like to thank the management of GR Infra for giving us this opportunity to host the call. Today from GR we have the director of the company, and Rathi ji is the group CFO. So without taking any further time, I would now like to hand over the floor to the management for their opening remarks and the updates on the quarter. Thank you, and over to you, sir. Members of the management, please go ahead with your opening remarks. Thank you, Parikshit ji. Good afternoon, ladies and gentlemen. मैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की ओर से Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 के अर्निंग कॉल्स में आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ में ग्रुप CFO श्री आनंद जी राठी मेरे साथ में हैं। अब आपके साथ में सेकंड क्वार्टर के की हाइलाइट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। ज़्यादातर प्रोजेक्ट में हमें अपॉइंटमेंट डेट मिलने के कारण इस क्वार्टर में पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में एग्जीक्यूशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे जब देखते हैं तो कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू करीब 5% के इंक्रीज के साथ में 1777 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल इस क्वार्टर के Q2 क्वार्टर के 1699 करोड़ रुपए था और इस क्वार्टर में कंपनी को करीब 6 करोड़ रुपीस का अर्ली कंप्लीशन बोनस भी मिला है। कंपनी का ₹260 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 278 करोड़ रुपीस था। 30 सितंबर 2022 को L1 प्रोजेक्ट की इंक्लूड करते हुए हमारी ऑर्डर बुक वैल्यू करीब 16,200 रुपीस है, जिसमें L1 प्रोजेक्ट का करीब 592 करोड़ रुपीस भी वैल्यू शामिल है। 30 सितंबर 22 को कंपनी की एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक करीब 10,100 करोड़ रुपए है। ऑर्डर बुक में करीब 93% शेयर रोड और हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का है। Q2 फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने 3 प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल क्लोजर अचीव किए और अभी तक कंपनी को 2 प्रोजेक्ट का अपॉइंटेड डेट भी मिल चुका है। आज कंपनी के पास में 9 ऑपरेशनल और 9 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और 5,500 करोड़ रुपीस के 6 हेम प्रोजेक्ट्स की अपॉइंटेड डेट अभी आनी बाकी है और इन प्रोजेक्ट की भी अपॉइंटेड डेट इस साल में आनी एक्सपेक्टेड है, इस फाइनेंशियल ईयर्स में। इस क्वार्टर तक कंपनी ने करीब 16,450 करोड़ रुपए की बिड्स सबमिट की है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का मेट्रो प्रोजेक्ट है और 15,000 करोड़ रुपए के करीब 15 रोड प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा 450 करोड़ रुपए का एक रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। इंडस्ट्री में कंपटीशन इंटेंसिटी अभी कम हो रही है, जो कि रिसेंट बिडिंग पैटर्न में भी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट का इंफ्रा फोकस से हम काफ़ी एक्साइटेड हैं तथा हमें पूरा विश्वास है कि हम हमारे इस साल के 15,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट है उसको लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। इस टारगेट को हम पूरा कर पाएंगे। इस बेसिस पे हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 से हम अपने ईयरली 15 से 20% के जो ग्रोथ ट्रैक पर आ सकते हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की जो वॉलेटिलिटी है वो अभी भी कंटिन्यूइंग में रिस्क बनी हुई है। इन्वेट के बारे में बताना चाहूँगा। इन्वेट की प्रोग्रेस में आपको मैं बता दूँ कि अभी प्रोजेक्ट की एसपीवीज का टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस आने वाला है, कुछ वीक में कंप्लीट हो जाएगा तथा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्राफ्ट ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स इस कैलेंडर ईयर तक रेडी हो जाएगा। सीबीआई मैटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे एम्प्लॉई अभी बेल पर रिलीज हो चुके हैं, पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हमारी कंपनी एक लॉ अबाइडिंग कंपनी है और हम एजेंसी के साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं।
रिसेंट में हमें एक डिपार्टमेंट का 1 महीने का लेटर मिला है जिसे हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं। अभी आपको आनंद जी कंपनी के क्वार्टरली हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Good afternoon, all. Let me run past you financial highlights for the of the company for the quarter ending September 2022. So our standalone revenue from operation is at 1,777 crore in the quarter, with an increase of around 77 or 78 crore compared to the same quarter of the previous year. Similarly, our consolidated revenue from operation also increased by 254 crores at rupees 2,136 crore, with a growth of approximately 13% compared to the same quarter of the previous year. Our standalone EBITDA margin for the quarter was around 14.63%, which is lower in compared to, of course, lower in compared to the same quarter of the previous year. This decrease was mainly on account of the additional provisioning as well as some CSR expenses, but also elevated level of inflation is also one of the cause for this decrease. Our EBITDA margin at group level has increased to 28% in quarter ended September 2022 from the 21% in the quarter ended September 2021. It's largely due to increase in the financial income recognized in the current period due to revision in the interest rate or bank rates. Standalone PAT margin stood at around 164 crore in the current quarter, which was 163 crore in the previous quarter of the last financial year. PAT margin at consolidated level increased by 78% to the tune of 336 crore in the current quarter as compared to 189 crore in the same quarter of the previous year. Our standalone net worth stood at around 4,848 crores at the end of the current quarter, which was almost 4,364 crores at the end of the last financial year. Our net worth at consolidated level is around 5,551 crore at the end of September 2022, which was 4,812 crore at the end of fiscal 2022. Our standalone total borrowing outstanding at the end of September 2022 is around 911 crore, which includes short-term borrowing of 30 crore approx, with debt to equity ratio of 0.19. This was rupees 1,055 crore at the end of June 2022. Our total consolidated borrowing outstanding at the end of September 2022 is 5,269 crore, with debt to equity ratio of around 0.95 times. During the quarter, company has made addition to the fixed asset amounting to rupees 50 crore. Our net block of property, plant and equipments, including CWIP, is approximately 1,581 crores at the end of September 2022. Investment in our subsidiary companies in form of loans and equity is around 1,567 crores at the end of September 2022. It was around 1,320 crore at the end of fiscal 2022. Balance contribution required to be made for our HAM projects is approximately 1,800 crores, of which we are expecting a contribution of 450 crore in the current fiscal itself. Our trade payable, our trade receivables at the standalone basis are around rupees 1,096 crores at the end of September 2022 as compared to 716 crore at the end of fiscal 2022. Our trade receivable at the consolidated level are around 534 crore at the end of September 2022 as compared to 664 crores at the end of fiscal 2022. Increase in trade receivables is mainly on account of debtors from our own SPVs where loan disbursement has been deferred by us. Our unbilled revenue at the standalone basis is around 727 crore at the end of September 2022 as compared to 581 crore at the end of fiscal 2022. Our unbilled revenue at the consolidated level is around 388 crore at the end of September 2022 as compared to 393 crore at the end of fiscal 2022.
Inventory level has also gone down. It's around 923 crore at the end of September 2022 as compared to 1022 crore at the end of fiscal 2022. Our cash and cash equivalent at the standalone basis is around 290 crore at the end of September 2022 as compared to 445 crore at the end of fiscal 2022. Cash and cash equivalent at the consolidated level is around 900 crore at the end of September 2022 as compared to 1095 crore at the end of fiscal 2022. So our order book at the end of current half year stood at around 16,220 crores, which includes 592 crores of projects with L1 status. Our standard mobilization advance outstanding at the end of September 2022 is around 259 crores as compared to 71 crore at the end of fiscal 2022. I sincerely thank all the stakeholders, including employees, business partners, vendors, bankers, auditors, who are part of the growth journey of our company. On behalf of GI Infraprojects Limited, I thank everybody who's attending the earning call. May I request moderator for opening of the floors for question and answer session. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may enter star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mohit Kumar from DAM Capital. Please go ahead. Hello. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon, and thanks for the opportunity. So my first question is, how does the bidding pipeline looking like from NHAI, and any color on the order outlook for H2 FY23? And what you observed in the H1, the bidding has been pretty muted. Can I expect this to pick up in H2 substantially? Do you expect it to be better than FY22? Members of the management, we are not able to hear you. Yes. pipeline कितने 55,000 सर इस साल जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं करीब एनएचआई में जो जिनको हम टारगेट कर रहे हैं 55,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं और ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये सभी कंप्लीट बिड हो जानी चाहिए जो अभी पाइपलाइन में बिड मतलब टेंडर फ्लोट हो चुके हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स भी इसमें आने की अभी टारगेट है एनएचआई का और ये कंटिन्यूशन में इस साल 23 और 24 में जो गवर्नमेंट जिस तरह से अनाउंस कर रही है कि पिछले साल भी इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपीस के हेम प्रोजेक्ट्स के लिए कहा था और अगले साल भी 24 में भी तो अभी पाइपलाइंस बहुत अच्छी है ऑल्दो जो गवर्नमेंट की जिस तरह से वर्किंग रहती है कि फर्स्ट 3 क्वार्टर में जो बिडिंग का जो वर्किंग है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है और बिडिंग का जो वर्किंग है वो 4th क्वार्टर में ही हो पाता है और ऐसा लगातार पिछले 2-3 साल में देखने को मिल रहा है हमारे कंपनी को जो प्रोजेक्ट अवार्ड भी होते हैं जनरली जो है लास्ट क्वार्टर में ही मिल पाते हैं और इस तरह से अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि 4th क्वार्टर में हमको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और इसके अलावा कंपनी हाईवे के अलावा ट्रांसमिशन और रेलवे और मेट्रो पे भी लगातार बिडिंग कर रही है और इनमें भी अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रही है जो प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइंस हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है Understood, sir. Secondly, sir, the second half, your first half, revenue has been slightly muted. How do you expect the H2? Of course, you said that the FY24 onwards, you expect कि 15 से 20% growth आएगा. पर अभी H2 में do you expect it to flattish or and also some comment on the EBITDA margins which you are expecting in FY23? So
Yeah, Mohit. So S2 I would say it would be more kind of flattish, reason being that the project where, are depleting order book, I would say, because whatever projects right now we are having in our hand and which is executable, right, we'll be executing on those projects only, and those projects are to be executed in next 2 years of time, right? So given that not much orders we are having within our portfolio, for S2, yes, of course, I mean, I don't believe that there would be growth of 15-20%, as we have already given the guidance that for the current year our growth would be, in terms of, if we compare it with the previous year, it would be in the range of 5-10% only. And yes, of course, in terms of EBITDA margin, that we have already mentioned that our EBITDA margin would be, between 15-16%, again, depending on how inflation, pan out, basically. Though we in last quarter we started seeing that inflation was coming down, but again from last 1 week probably we see that inflation is going up. So that's how, I mean, it's depending on the function of inflation and all that. But my point is that probably will be having that flattish growth for the current year. Understood, sir. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Shravan Shah from Dolat Capital. Please go ahead. Thank you, sir. So, sir, just continuing the question. So, in terms of once we have the flattish second half, and then the 15-20% growth in 24, so that momentum should continue for at least couple of years. बिल्कुल, ये जो है आने वाले मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 साल तक ये ग्रोथ बनी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जिस तरह से इंफ्रा में फोकस है और जिस तरह के जो वर्क पेंडिंग है इंडिया में, इंफ्रा में बहुत काम होना बाकी है, तो अगले 3-4-5 साल तक तो लगातार इस तरह की ग्रोथ रहेगी निश्चित तौर पे। ओके, और सर हम जो बोल रहे हैं कि 15,000 करोड़ इनफ्लो वी आर टारगेटिंग, सो अभी तक कितना अपना लास्ट टाइम वी सेड अराउंड दिस टिल नाउ हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? अभी अपन ने बिड जो सबमिट कर रखी है, जैसा कि मैंने बताया था कि करीब 16,500 करोड़ रुपीज की हमने बिड कर रखी है इस क्वार्टर में हमने 16,000 की बिड कर रखी है और टेंडर ओपन होने बाकी हैं। तो अभी ऐसा जो टेंडर ओपन होने बाकी हैं तो उन्हीं से अभी पता चलेगा। अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको ये कुछ काम मिलने चाहिए, 2 से 3 काम हमको कम से कम इस जो बिड सबमिट कर रखी है उनमें मिलने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में बिडिंग जो है ना, अभी आप देखेंगे तो पहले 3 क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा बिडिंग होती नहीं है और लास्ट क्वार्टर में ही बिडिंग ज़्यादा होती है। और इसमें क्या है, जो इनिशियली क्या है, कंपटीशन इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग थोड़ा सा सिक्योर बिजनेस अपने आप को उस तरह से चलते हैं, तो आने वाले टाइम में जो लास्ट क्वार्टर है उसी में हम ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, तो सर हाँ समझ गया सर। सो अभी आगे जाके ये जो आपने बिड भी सबमिट करी है और आगे भी टारगेट कर रहे हैं, तो 2 चीज़ है। एक तो अभी कंपटीशन क्या लग रहा है आपको इन पर्टिकुलरली हैम एंड ईपीसी में कैसा है, एंड ये 15,000 करोड़ जो टारगेट कर रहे हैं, सो लास्ट टाइम वी सेड 10 से 12,000 करोड़ हमको रोड में अपनों को चाहिए। सो मोस्टली दैट वुड बी इन द हैम फॉर्म, एंड ब्रॉडली वही समझना है कि ये कंपटीशन कैसे रहेगा, नहीं ये अगर आ जाते हैं तो आगे जाके मार्जिन जो हमारा है 15-16%, तो वो सस्टेनेबल है। देखिए क्या है कि कंपटीशन कूल डाउन तो हुआ है और अभी एकदम जो पहले की स्टेज थी उस लेवल पर तो नहीं है, प्री कोविड लेवल पर तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन कूल डाउन जरूर हुआ है। और जो लोग एग्रेसिव बिडिंग कर रहे थे उन लोगों को समझ में आ रहा है कि उतनी एग्रेसिव बिडिंग सस्टेनेबल नहीं है। और 15-60% एबिटा मार्जिन मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री में ये बना रहेगा। और अगर इस इंडस्ट्री मतलब ये जो मार्जिन है ये एक सस्टेनेबल मार्जिन है जो कि इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। ओके समझ गया। सर एक लास्ट ऑन द डेटा पॉइंट्स, सो यू सेड 1,800 करोड़ अपने को इक्विटी और डालने का है, उसमें 450 करोड़ ये साल में। सो 24 एंड 25 में लास्ट टाइम वी सेड 700 करोड़, सो दैट रिमेन्स द सेम? That remains the same so far.
एंड जो 6 अपना हैम प्रोजेक्ट्स है जहाँ अपॉइंटेड डेट बाकी है 5,500 करोड़, सो सब कुछ अपॉइंटेड डेट मार्च फरवरी में कि ये दिसंबर में भी कुछ आएंगे अपॉइंटेड डेट? वो दैट वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेजुअली. आई एम नॉट से कि पूरा मार्च में ही आएगा. मे बी लेट्स से दिसंबर में कुछ आ जाएगा. अभी आई मीन वी आर एक्सपेक्टिंग 1-2 प्रोजेक्ट तो विद इन नेक्स्ट couple of days, I would say couple of weeks in November itself. So, but unless until we receive that letter, now we can't say something. But point is that most of the, I mean, all the projects will be having appointed date before March. ओके. समझ गया. एंड सर कैपेक्स अभी हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में 215 करोड़ का कर लिया है, तो फुल ईयर के लिए लास्ट टाइम वी सेड 200-300 करोड़, 300 to 400 करोड़, सो वो सेम रहेगा. Yeah. So वो that capex target are almost same. 350 का अपने target guidance है, and that would be the same range. एंड हैम का डेटा सर अभी कितना होएगा एज ऑन सितंबर? हैम का डेटर would be I think 750 करोड़ के आसपास का है. Okay. That was the major reason in terms of increase in 600 crore. 600 crore. Okay. That's it from my side. All the best and thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ashish Shah from Centrum Broking. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. सर अगर ये डिपार्टमेंट का जो आपने नोटिस अभी एक्सचेंज में डाला है, कैन यू जस्ट इलैबोरेट अ लिटिल बिट, व्हाट इज द एनी रीजन दैट दे हैव मेंशन, एनएचआई हैज मेंशन इन द लेटर? सर ये हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं. वैसे उन्होंने कोई रीजन दिया नहीं है, और इसको ये हमको आज ही मिला है रिसेंटली, और अभी इसके ऊपर इवैल्यूएट कर रहे हैं. अभी इसमें क्या हमको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए और क्या इसको करना चाहिए. राइट. सो सर अभी हमने कहा कि हमने 10 हैम प्रोजेक्ट बिड करके रखे हुए इस समय. सो क्या इसकी बिडिंग के आउटकम पे इफेक्ट पड़ेगा इस डिपार्टमेंट का, या यू थिंक दिस इज बियॉन्ड द बिडिंग डेडलाइन इज बियॉन्ड दिस 1 month पीरियड? सर ये लेटर हमको अभी मिला है और इसका इवैल्यूएट कर रहे हैं. हम नहीं जानते ये एनएचआई इसमें किस तरह से एक्ट करेगा. इसको इवैल्यूएट किया जा रहा है और इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे. जैसे भी होगा उसको हम आने वाले टाइम में आपको बता पाएंगे. मतलब एज ऑफ नाउ आशीष जी वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि 1 महीने का डिपार्टमेंट है. अभी उसके लिए इम्प्लीकेशंस हैज टू बी उसके लिए देखना पड़ेगा, मतलब व्हाट आर द ऑल इम्प्लीकेशंस, राइट? बिकॉज तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. वी नीड इवैल्यूएट दोस ऑल थिंग्स. ठीक है सर. और इनविट के ऊपर सर इफ यू कैन अपडेट, आई मीन यू डिड मेंशन इन द ओपनिंग रिमार्क्स, लेकिन in terms of timelines, are we looking to go live before the end of this financial year, and any amount that we have firmed up on how much we are raising? वो amount as of unless until, I mean, so it's a basic of interaction with what, I mean, I'll be interacting with the investors also, and then basis will be forming our decision in terms of what amount will be raising at InvIT level. ये जरूर है कि whatever amount that would be raised, that would be utilized for repayment of debt at SPV. वो जरूर है. GR में अभी as of now we are not raising any cash because of that InvIT. InvIT target was that we'll be targeting that InvIT launch before this financial year end. So वो that target is just continuing, and the process is on. Right. Okay, sir. Thank you. That's all from my side. Thank you. The next question is from the line of Praful Kumar from Diamond Asia. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Yes, Am I audible? we can hear you. Yeah, we can hear you. Please. या सर जस्ट सर 2 ही सवाल हैं. एक तो अभी इनविट का ही एग्जैक्टली कि सर अमाउंट कितना देख रहे हैं और इससे क्या अंतर पड़ेगा अपने बैलेंस शीट पे, अपने ऑपरेशंस पे? हाउ डज इट हेल्प द कंपनी इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ? और दूसरा जो आपने बीच में ट्रांसमिशन बिजनेस भी किया था शुरू, उस पर क्या अपडेट है सर? क्या रहा, मतलब टीम बिल्डिंग क्या रही? और तीसरा फाइनल क्वेश्चन, अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं अपनी कंपनी हर लीन पीरियड में, जैसे लीन पीरियड है लास्ट 1 साल का 1.5 साल का, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम करती है और फिर उसके अगले 5 साल इट्स अ लैडर अप इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू एंड EBITDA, एब्सोल्यूट नंबर्स, दे गो अप मीनिंगफुली. That's the pattern that I have seen for last 10-15 years in your company.
So what preparation you have done in last 2 years in terms of capacity building और अगले से 3 से 5 साल जो मतलब अब यहाँ से शुरू होना चाहिए ऑर्डरिंग, आपको कंपटीशन कम हो गया है, so things are in your favor right now, industry is stacked up nicely and we go into elections next year. तो कहाँ मतलब ओवर मीडियम टर्म क्या कैपेसिटी बिल्डिंग है, तो कहाँ देख रहे हैं सर कंपनी को? तो सबसे पहले मैं आता हूँ इन्विट पे। तो इन्विट पे हम लोग जो कंपनी लेवल से ये सबसे बड़ा जो चेंज होगा, ये केवल डेट रिड्यूस होगा। कंपनी की बैलेंस शीट से डेट हटके और इन्विट पे आ जाएगा, और अपन जो मार्केट से जो ले रहे हैं उसमें डेट रिड्यूस करेंगे। तो कंपनी लेवल पर एज सच जो बैलेंस शीट लाइट हो जाएगी, और कंपनी के पास में मोर विजन आएगा कि आने वाले जो हैम के प्रोजेक्ट्स हैं हम कंप्लीट करके और इन्वेस्ट में ट्रांसफर कर सकें, और जो एज ए इन्वेस्टर आ जाए, और हम लोग एफिशिएंसी अपनी जो एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ा सके। और इन्वेस्ट की प्रोग्रेस जहां तक मैंने आपको बताई थी कि इसके जो सेबी के साथ जो इसका डीओडी पे काम चल रहा है अपना, एंड ड्यू डिलीजेंस इज ऑन इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एसपी, जो अपन ने पहले भी बोला, probably will be completing our due diligence process and will be able to complete that DOD document, draft of the document by end of this calendar year. उसके बाद में our target of launching this INVIT is before this next financial year, is financial year itself, I mean FY23. उसमें अमाउंट आज की डेट में थोड़ा बोलना मुश्किल है कितना रेज करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आवर प्लान इज टू ट्रांसफर 7 ऑपरेशनल हैम एसेट, जो अभी हम लोग उसमें वी आर टारगेटिंग कि ये सारे टारगेट उसमें ट्रांसफर कर दें बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर 2023। और इनविट में हमारे को एक एडिशनल, आई मीन दैट इनविट वुड बी काइंड विल बी अंडर दैट इनविट, दैट टीम हैज ऑलरेडी बीन सेटअप, वो इंडिपेंडेंट टीम भी सेटअप हो रखा है, दैट दोज प्रोसेस इज टेकिंग केयर ऑफ बाय दोज टीम। और इस इनविट में अपन नॉट ओनली दैट इनविट विल बी एक्वायरिंग द एसेट फ्रॉम जीआर, दे विल बी टारगेटिंग इवन आउटसाइड एसेट एज वेल, वो भी अपना टारगेट है। सो दैट इनविट वुड बी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वेयर आर एफिशिएंसी, मतलब व्हाट आर कंट्रीब्यूशन वुड बी ब्रिंगिंग मोर एग्जीक्यूशन स्किल ऑन दैट इनविट, while investing skill would be will be, हमने उसके लिए टीम सेटअप किया है, and that from investment industry itself we have hired the people, right? तो ये एक मतलब we are targeting कि if we can give good returns to investor also by combining the investment skill along with execution skills, that is our target। और अपने को लॉन्ग रन में हमारे लिए मतलब it would be easier for us कि प्रोजेक्ट बना के ट्रांसफर करना। So for me, I mean, GR would be kind of acting as a EPC agency only going forward. ये and this would be again a monetization vehicle also, मतलब हम लोग जो इसको टारगेट भी वैसे कर रहे हैं। So this is all about INVIT। और ट्रांसमिशन बिजनेस में हमने जैसे पिछली बार बताया था, एक प्रोजेक्ट हम ले चुके हैं और एग्जीक्यूशन उसका अंडर प्रोसेस है, पूरे प्रोग्रेस में चल रहे हैं हम, एज पर माइलस्टोन उसकी प्रोग्रेस चल रही है। और आगे अभी जो पाइपलाइन में बिजनेस है करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए के जो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स, उनको हम बिड कर रहे हैं। और इसके लिए जो एग्जीक्यूशन और इसकी जो ऑपरेशन की जो टीम है वो अपने प्रॉपरली प्लेस्ड है और इसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरह से पावर की रिक्वायरमेंट और जो ग्रोथ है आने वाली है, तो एनर्जी सेक्टर में हम लोग पूरी तरह से फोकस हैं, और पावर ट्रांसमिशन के अलावा भी दूसरी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हम किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अब थर्ड आता हूँ आपके थर्ड क्वेश्चन पे, जो कैपेसिटी बिल्टअप पे, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, पर मैं आपको अभी इसमें गाइडलाइन देने में थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं कोई पर्टिकुलर आपको एक सेक्टर बता सकूं कि यहाँ पर हमारा डिसीजन हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन काम बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, उसके ऊपर भी काम किया है। जैसे हमने अपनी डिज़ाइन स्ट्रेंथ बढ़ाई है, फाइनेंशियल में भी हम लोग नए लोगों के साथ में एसोसिएट हुए हैं जो हमारे पार्टनर बने हैं, जिस तरह से उसमें हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। और आगे आने वाले टाइम में और कुछ सेक्टर भी देख रहे हैं, बट ये एक थोड़ा सा मतलब अभी
इस लेवल पे ये बताना मुश्किल है कि अपन और क्या नया कर रहे हैं, ये आपको मैं मतलब आने वाले क्वार्टर्स में बता पाऊंगा। और एट द सेम टाइम जो इनविट अपना launching or you I mean enter into this InvIT space, that is also a kind of capacity building which we are envisaging. Reason being that कि अभी हम लोग ने पहले in past also we have sold our projects to investor. So this time we are trying to build up our capacity. We want to I would say हमारे को encash करना है, because see जब हमने projects past में बेचे थे probably will not able to encash on our operational excellence, क्योंकि मैं O&M करता ही नहीं था project का, तो मेरे को उसका so I have to lose on that particular front. तो अब ये हमारे को is going to give me return in next 10-15 years. जब मैं I'll continue to be O&M of project manager for those assets while I'll not be holding those assets in my balance sheet. तो ये भी it's a kind of capacity building which we are doing in our company also. Praful, you have any questions? No, thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, if you would like to ask questions, please enter star and 1. The next question is from the line of Tina Virmani from Kotak Securities. Please go ahead. Hi, sir. My question is related to margins. You mentioned initially that there were certain additional provisioning and some elevated costs in the quarter. Can you please specify what is this provisioning for, and if you can quantify the impact or the amount related to the same? So yeah, Tina. So if we are comparing it with quarter of the last financial year, right? So my additional provision is with respect to the debtors, long outstanding debtors, I would say, and there we have made some policies for which we are providing for. If it is it's on basis that age bucket which we have decided internally, and as and when those monies is received back, or then we'll be again we'll be treating as an income. So that is also you will have that. In fact, in other income you'll find this impact also, where my other income is quite high because of some write back of provision which we have made in past. So it's as per policy which we internally decided that to provide for the debtors which are basis that their age limit, and in current quarter the amount of provision is around 12 crore, which was not there in the previous quarter. Previous means the last year current quarter, last year this quarter, right? Q2. And some CSR provisions also. I mean, we are started providing for CSR expenses on quarterly basis. Earlier it was on yearly basis. Right? So to that extent, around 4-5 crore is on account of CSR expenses, 12 crore is on account of debtors. So that's more. These are the additional provisions. So even if I adjusted with this additional provisioning as well as the CSR provisioning, had it not been there, margins would have improved to somewhere around 13.8% as compared to 12.8%, which is reported in this quarter, ex of other income. So traditionally, your margin mix, and even on the guidance you are saying that it is in the range of 15-16%. So, and looking at the current set of numbers, it is coming out to be lower than 14%. So, what is it related to, or is it going to be? Yeah. So it is. I mean, that inflation impact is also there to certain extent. Bonus का भी impact है. In the last quarter it is around 12 crore. Now this quarter it is 6 crore. तो बहुत सारा कुछ impact है. Maybe because of some inflation. Inflation को is to evaluate is very difficult here. But what we believe is that some certain margin has gone down. I mean, margin was impacted because of some inflation also. लेकिन yes, and my execution also for current quarter, if I am not able to. और एक चीज और है which is probably it's very difficult to evaluate. But then my project status. What kind of project status I am, in the current quarter, what kind of bill I have, raised, and for what activity. So थोड़ा उससे भी depend करता है. But so we are confident going forward will be in the range of again 15-16%. Okay. और inflation का सर ये तो pass through होगा ना, this impact. कभी भी inflation pass through होता है. Provisions are there. We say there is a pass through, but it is not direct linkage.
So it is always, it links to CPI, WPI, while, certain raw materials or certain materials, no, it's not having direct linkage with those, index and all that. And that also comes with some lag. So it's very difficult, but yeah, that is the one cause, one reason is there. So that will not be impacting coming quarters because now raw material prices to an extent have already started correcting. See, there may be impact of inflation may be around 1%, right? So what I'm saying is, if I'm saying then 15-16% kind of EBITDA margin we are expecting. So uska 50 inflation is coming down. Abhi kabhi it's volatility. I mean, inflation is so far is volatile, right? Kabhi news aata hai, and maybe because of some dollar rising, some maybe because of some crude rising and all that. So point is, yes, it effectively it will be depending on what kind of inflation will be inflation era we will be into. But yes, I mean we are confident looking to the current situation. We are confident we'll be getting that kind of margin going forward. Okay, and the remaining H2 also. Yeah. And my second question is related to your inflow target of 15,000 crores. So I think you mentioned it to some other participant also that most of it would be coming in by Q4. But given the recent notice regarding debarment of the company for a month, so almost like effectively December would go in that. And it will be just Q4 wherein you would be participating for particularly for the NHAI bid. So do you expect the entire shortfall for the year as of now to be covered up in Q4 of around 15,000 crore or maybe little lesser than that? अगर अपन वैसे भी देखें ना, ये जो डिपार्टमेंट है वो केवल 1 महीने के लिए है. ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई बहुत ज्यादा टेंडर नहीं है. इस महीने में मैक्सिमम जो टेंडर्स हैं वो दिसंबर से मार्च के बीच में है. तो जब तक अपना डिपार्टमेंट का ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इसको भी हमें आज ही हमको मिला है, तो हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, एनएचए के साथ हमको किस तरह से डील करना है. क्योंकि ऐसा हमारे ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन एनएचए ने ये एक्शन लिया है, तो इसको हम किस तरह से डील करेंगे वो एक देखना है. लेकिन अभी भी हम पूरे होपफुल हैं कि जो Q4 है उसके अंदर हम लोग अपने जो टारगेट है वो अचीव कर सके. जिस तरह से पाइपलाइन है, हम काफ़ी एक्साइटेड है. गवर्नमेंट की पाइपलाइन जो हेम के अंदर है और वो काफ़ी अच्छी है. और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, जिस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और हम इसको अचीव करने की काफ़ी अच्छी पोजीशन में है. Okay. So lastly, on this debarment, this is related to the CBI case that happened some time back, or it is related to any other reason? I mean, normally it also happens because of some mishap on the sites. So ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है कि कोई साइट पे कुछ प्रॉब्लम हुआ because of which NHAI would have debarred you from participating? अभी हमको इस तरह का कुछ भी मतलब इस लेटर से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन लगता यही है कि जो सीबीआई इंक्वायरी थी उसी से रिलेटेड होना चाहिए. लेकिन अभी तक चूंकि ये आज ही मिला है, इसके बारे में पता किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्यों हुआ है. So it's too early to say what is the reason for this, but then point is, what point you are making is if there is any mishappening at site, we are not aware of this fact. अगर ऐसा कुछ होता तो that also will we would have listed in that exchange itself. So ऐसा हमारे को मालूम नहीं. ठीक है सर. Thank you. That's it from my side. The next question is from the line of Jitendra Rishi from Axis Capital. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Thank you for taking my question. So just continuing on the debarment, sorry, I'm harping on it. So sir, I just want to understand, in this 1 month, you will make the presentation to the NHA, what could be the reason and why they have done it. But sir, is there any chances of getting this extended, or it is for 1 month and done? हेलो इधर अभी एनएचए देखिए, आने वाली एनएचए किस तरह से एक्शन लेगा, क्या लेगा, इसका अभी अपन कुछ भी ब्रीफ नहीं कर सकते. मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ. ये 1 मंथ भी क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ है, जबकि हमारे ऊपर कोई किसी तरह का ब्लेम नहीं है. अभी तक कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का चार्जशीट नहीं है, किसी तरह का ब्लेम नहीं है. लेकिन अब एनएचए ने एक्शन लिया है, उसके ऊपर हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेंगे, एनएचए से बात करेंगे
तो अभी ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसको अपन But generally, Jitin, उसमें what I would probably presume is that probably NHI may give the department notice for 3 months, and then probably by basis our representation that can be come down to 1 month or 15 days. Revoke it. ऐसा नहीं होता कि NHI पहले will be doing 1 month department and then it will be extending. मतलब there is no point like that. I mean, I don't think this is the industry practice. I don't believe so. Got your point. Right. So hopefully this should be, because most, as you said, most of the tenders are lined up in December, so we should be able to bid. So in this case, if the tender dates, submission date in December, then obviously we can submit it. That's not a problem, because it's just for the 1 month. So as of now, I mean, we believe so. We will be targeting even for the, I mean, November month tenders also will be targeting. As any age, we will not be bidding. But then this, I mean, we have to evaluate the content, and I mean, we have to go through the contents, and we have to evaluate what would be the implication of this department. See, we'll try all our level best, you know, to, I mean, I don't know, I mean, to have some clarification, to have that, I mean, department would be, what would be the all implications that will be having, you know. It's for 1 month. Abhi hum log ko, matlab, we have to, you know, go through some NHI, SOPs or any more circular, all that. I don't know, I mean, that has to be seen. I got it. Hope this should, you know, should not have any issue on the bidding process. Sir, if at all I have missed out, sir, can you tell me the retention money outstanding and unbilled revenue standalone as on September? So unbilled revenue, I told in, so that was around, unbilled revenue was around 700, so unbilled revenue was 727 crore on a standalone basis. And retention, sir? Retention, I am not having that number readily with me. Probably we can give you, you know, offline. And sir, this in H1 we have done investments in SPV. To the so retention again, when we are saying retention is part of debtor only, right? I mean, sir, it would be, you know, part of debtor only. Right. So this debtors of around 1,096 crore is including retention. Right. Got it. And sir, on the in the H1, I believe we have invested almost 190 to 200 crore in the SPVs, right, sir? Right. So basically, the 450 targeted this year, we already invested almost 200 crore. So the balance H2 will be investing around 250 crore. Right. So our guidance was 700, you know, for every calendar year. I mean, every financial year. So that, I mean, as of now, we are going as per plan. Okay, so just want to clarify that you said that 450 crore will be for H2 investment. Not for H2. So for whole year, it would be in the range of 600-700 crore, right? 600-700. Got it. समझ गए. वही थोड़ा confused हो गया ना. ठीक है. Okay. And sir, just again coming back on the order inflow. So we have given a guidance of 15,000 crore. So sir, we maintain that almost 12 to 13,000 will be from the roads, and balance 10 to 15% will continue from other segment, right, sir? Like power T&D, railways, something like that. हेलो. हाँ जी, बिल्कुल यही रेशियो रहना चाहिए. But sir, ये power T&D future में भी we'll also flip the asset, ना sir? We don't intend to hold the asset, right, in the power T&D segment. Yes. And sir, again on the margin. So going forward, sir, the guidance on the core margin will remain at like 15, because obviously sir, the core margins are still at a lower level compared to the, you know, obviously gross margin because of the bonus and other component. But core margin still remains below 15%. So we continue to guide as a core margin 15%, and while including bonus, we continue to guide 16%. Is that the understanding correct? Is my understanding correct? See, I mean, generally we are targeting that bonus would be, you know, over and above 15%. Right. So that's how we target. So basically 15% we can assume core margin safely, and 1% to 2% additional for the bonus component. Right. And sir, just on the debt, so as you said, like, you know, we have deferred the debt go down at SPV level, obviously because of the lower executed order backlog. But this, once the project reaches the milestone, so probably from next quarter onwards, we can expect this to normalize and our debtors to come down, right, sir? See, debtors is probably, I would say, because see, we haven't drawn down that debt at SPV level, and hence our debtors to SPV is, you know, inflated, right? Got it. And why we have not drawn down is that
because of the liquidity as of now. I mean, because of the liquid position right now, we are, passing through within our company. So there is no point, in drawing down the debt from SPV level and paying interest while keeping that cash and bank balances at the company level, right? So that was the main reason. Thank you. Okay, Chetan, if you have any questions, thanks a you lot. may join Yeah, the queue thanks a back. lot. Yeah. Thank you. The next question is from the line of Alok Deora from Motilal Oswal. Please go ahead. Hi, sir. Good afternoon. Sir, just one question on this recent notification on the debarment. So, any tenders which we would have bid if they were to open now? So, any thoughts? Will they go through, or it's only for that period where you can't bid? सर अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जो लेटर अभी रिसेंटली मिला है अपने को, इसको विजिट कर रहे हैं हम लोग, और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए कि जो पहले के जो टेंडर है उनपे कोई इफेक्ट होगा. ये ओनली फॉर 1 मंथ. दिस लेटर वैसे बोलेंगे तो बोलेगा इट्स अ डिबारमेंट फॉर 1 मंथ, फ्रॉम 1 मंथ स्टार्टेड फ्रॉम टुडे और डे बिफोर, जो भी है. बट देन पॉइंट इज, जो आज से 6 महीने पहले मैंने बिड कर दिया है, काम ले लिया है, कर रहा हूँ, उस पर कैसे इम्पैक्ट आता है? आई डोंट थिंक दैट देयर वुड बी एनी इम्पैक्ट. नो सर, आई वाज आस्किंग कि बिड किया और टेंडर ओपन होना बाकी है, और सपोज वो ये मंथ में ओपन होता है, तो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. मतलब लॉजिकली तो मतलब व्हेन आई पार्टिसिपेटेड, व्हेन आई बिडेड, देन आई वाज नॉट डिबार्ड. तो लॉजिकली तो ये नहीं होना चाहिए. बट देन अगेन माय पॉइंट इज दैट इट हैज टू बी इवैल्यूएटेड. I mean, I can't say without, going through the documents or what is the processes or what are the practices which, generally been adopted by MORTH or NHI or whatever in this case. Sure. And sir, ये जो L1 है ऑर्डर बुक में 592 करोड़, वो तो सर अभी काफी टाइम से है, तो अभी मतलब why are we not like उस पे कुछ अपडेट है, या we are looking to remove it now? अभी तक अभी ये क्या है, 592 का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है. काफी एक्सपेक्टेशन थी. अभी ये दिसंबर तक इन्होंने कहा है कि हमको ये दिसंबर तक, मतलब इसका इस बार जो है दिसंबर तक इनका पता चल जाएगा. अभी या तो ये फिर प्रोजेक्ट हमको अवार्ड करेंगे, और अदरवाइज फिर हम आगे इसको लेकर नहीं जाएंगे फिर बैंक आने वाले टाइम. मतलब दिसंबर तक हमको होप है कि ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाना चाहिए. श्योर. एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन. सो सर, अभी जैसे वी आर लुकिंग एट अ मैसिव ऑर्डर इनफ्लो इन effectively Jan से March तक. अभी we see all the other players also are talking about a very strong order inflow during this period. तो अभी is there a downside risk कि उतना orders ना आ पाए, because competition भी heavy रहेगा वो period में, भले ही और because lot of these people will be queuing up. तो any downside risk की कि order inflow थोड़ा कम हो सकता है जितना estimate किया है उससे? बहुत अच्छी है, और मुझे लगता नहीं है कि उतना मतलब सभी के लिए मतलब स्पेस है. अभी फिलहाल तो इस साल की जो पाइपलाइन में जो जितने प्रोजेक्ट्स है, तो इज एम्पल स्पेस फॉर एवरीवन. और जिस तरह के हैम के अंदर जो अभी पिछले रिसेंटली जो कंपटीशन जो कूल डाउन हुआ है, उसको देखते हुए मुझे इसका चैलेंज नजर नहीं आता है. श्योर. जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर, एक्चुअली सो सर, अभी ये जो पावर T&D प्रोजेक्ट है, उसमें अभी कितना मार्जिन अपन वी आर लुकिंग एट? बिकॉज इफ यू सी सम अदर कंपनीज, दे टिपिकली आर मेकिंग सिंगल डिजिट मार्जिन, और 5 to 10% के बीच में मार्जिन बैठता है उसमें, प्योर EPC पोर्शन ऑफ द T&D प्रोजेक्ट. तो व्हाट्स द नंबर वी आर वर्किंग विद? तो ये देखिए, इस लाइन में अभी पावर ट्रांसमिशन में हम लोग एंटर हुए हैं. तो अभी जो फोकस जो है वो मार्जिन पे नहीं है, फोकस लर्निंग पे है. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की लर्निंग प्रॉपर टाइम पे कैसे डिलीवर की, और क्या चैलेंजेस है इसको प्रॉपर समझ सकें. फिलहाल फोकस यही है मार्जिन का अभी, क्योंकि आते ही किसी बिजनेस में मार्जिन करूंगा तो मेरा बिजनेस है नहीं मेरे पास में. वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आएगा सर. गॉट इट सर. ठीक है सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर. Thank you. Participants, if you wish to ask any questions, please enter star and 1. A reminder to all the participants, if you wish to ask any questions, please enter star and 1. Next question is from the line of Navid Virani from Bastion Capital Management. Please go ahead.
Hi sir, thank you for the opportunity. सर पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि हमारे कंसोलिडेटेड लेवल्स पे मार्जिन्स आर कमिंग आउट टू बी वेरी स्ट्रांग एट ऑल लेवल्स. So sir, just wanted to understand कि actually I missed the opening remarks as I joined slightly late. कि यहाँ पर is it because of the kind of bonuses we are getting, इसकी वजह से ऐसा मार्जिन आ रहा है? मतलब how should I मतलब we look at consolidated level margins going forward? See, our consolidated margin largely coming because of that interest income which we are getting from NHAI on the operational HAM projects, right? And interest income in last 6 months you have seen it's been rising, right? And 6 months is quite high. He said it's almost by RBI's rate by 2% almost. So it's all because of this that we our income is rising at SPV level, and hence that consolidated margin are rising. So this is only because of the rising interest rates, and this should be the run rate going forward as well, given the interest rates don't change. Right. Okay, sir. Thank you. That's it from my side. Thank you. Thank you. Participants, if you wish to ask any questions, please enter star and 1. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to management for closing comments. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंपनी पूरी लगन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ काम करती रहेगी और एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी इन्वेस्टर बैंकर्स हमारा इसी तरह से साथ देते रहेंगे और अच्छे भविष्य के लिए अपन सभी साथ मिलकर काम करेंगे. इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अपन पार्टिसिपेट करेंगे. मोदी जी ने जिस तरह से एजेंडा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का किया है अपन भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. थैंक यू. Thank you, Jinder ji and Anand ji for this opportunity. We can disconnect the call. Thank you. Thank you very much. On behalf of HDFC Securities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect.